न्यूरल नेटवर्क। वैस्कुलर कनेक्शन किसका होता है? वैस्कुलर कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है ना। सो द न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो द सेल बॉडी न्यूरल नेटवर्क है, द सेल बॉडी कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होती है, और उसके जो टर्मिनल पोर्शन है वो पिट्यूटरी में होती है, और बीच में क्या होती है? एक्सॉन होती है ना। तो सिंथेसाइज कहाँ हो रही है? हाइपोथैलेमस, एंड थ्रू द एक्सोप्लाज्मिक फ्लो it is coming there. Okay, but how it is synthesized? तो ऐसा नहीं कि ADH as such वहाँ पे पूरा synthesize होता है, it is synthesized at pre-pro hormone पहले बनते, उसके बाद प्रो हार्मोन्स बनते, उसके बाद वो हार्मोन में रिलीज होते। ओके, so you all know that posterior pituitary, it contains the nerve fibers there. उस न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स, है ना। मैग्नोसेलुलर लंबे होते हैं ना उसके एक्सॉन्स। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, पैरवोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन उसके जो न्यूरल नेटवर्क है वो कहाँ पे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। वो हाइपोथैलेमस को जो स्टॉक पोर्शन है, जो अपर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी स्टॉक, वहां तक जाते हैं, और उसके बाद वो वैस्कुलर कनेक्शन होते हैं, है ना। सो दीज नर्व फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड, है ना, अनमाइलिनेटेड होते हैं। एंड ठीक है, एंड देयर आर 2 न्यूक्लियाई, यू नो, जहां से ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। व्हाट आर दोज 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड? कौन कौन से न्यूक्लियस है बेटा? दे आर सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, है ना, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। एंड देयर आर पिट्यूसाइट्स होते हैं। पिट्यूसाइट्स क्या है? देयर आर स्पेशल एक्चुअली सपोर्टिंग न्यूरॉन्स। ओके, दे आर स्पेशल सपोर्टिंग न्यूरॉन्स। बहुत सारे यहाँ पे आपको मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए आसपास में क्या होते हैं? देयर आर पिट्यूसाइट्स, उसको हम कहते हैं पिट्यूसाइट्स। देयर आर स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स इन बिटवीन द एक्सॉन्स। एक्सॉन जो आ रहे हैं तो उसे सपोर्ट करने के लिए, इस तरह से आपने पढ़ा होगा ना, सपोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं? लाइक एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, वो सब सपोर्टिंग सेल्स है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्पेशल सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड पिट्यूसाइट, अपार्ट फ्रॉम द ग्लायल सेल्स जिसको सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके अलावा एक और सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं पिट्यूसाइट। ओके, so you all know these 2 hormones. These hormones are called neuro hormones because nerve से निकल रहे हैं, वहां पे synthesize हो रहे हैं, that's why they are called neuro hormones. And you all know these 2 hormones, ADH, which is also called vasopressin. Why they are called vasopressin? Can you tell? Contraction किस चीज कराते हैं बेटा? Why they are called vasopressin? Yes, it also apart from ADH क्या करता है? आपको वाटरी एब्जॉर्प्शन तो कर रहा है, साथ साथ में क्या करता है? ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करते हैं, है ना, थ्रू V1 रिसेप्टर्स, बट so that's why they are called vasopressin. And oxytocin, you all know these 2 hormones, as we have discussed that they are synthesized in the cell bodies of these 2 nuclei in the hypothalamus. After that, from there it is released through the flow. ये तो डायग्राम आपको पता है। These are the paraventricular nuclei, these are the supraoptic nuclei. Supraoptic nuclei mainly ADH रिलीज करता है ना, ये हार्मोन 90% of the ADH is synthesized there in the supraoptic nuclei. Rest 10% ऑक्सीटोसिन भी ये रिलीज करता है ना, सिंथेसाइज करता होगा। एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई mainly synthesizes the oxytocin and a small amount also the ADH also. Okay, so supraoptic mainly it is synthesizing the ADH and paraventricular mainly the oxytocin. ये देख सकते हो कितना, इधर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स, इसके एक्सॉन्स काफी लंबे होते हैं,
So these are also called vasopressin. Complete name is arginine vasopressin. AVP कहते हैं. That they are synthesized in the magnocellular cells of mainly the supraoptic nuclei and partly in the paraventricular. ठीक है? And there are special secretory granules जो आपके हार्मोन्स जो बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आते हैं, एक्सोप्लाज्म के थ्रू जो फ्लो करते हैं. These granules are called Herring's bodies. These are secretory granules that are transported to the axon terminal. नीचे आएगा ना, तो जो granules के फॉर्म में आते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में, है ना, these granules are called Herring's bodies कहते हो. And the genes, you know, of the ADH synthesis, they are located on the chromosome 20, where the genes of growth hormone located on which chromosome we have discussed. Then we are discussing the growth hormone. Yes, कहाँ पे होता है? Which chromosome? Chromosome कौन से chromosome पे होता है ये पूछ रहा हूँ. It is on chromosome number 17 and this is on chromosome number 20. Okay, and as we have discussed that this hormone ADH, it is synthesized from pre-pro hormones. पहले वो बनते हैं, उसके बाद pro hormones, उसके बाद वो disintegrate होकर hormones release करते हैं. And this pre-pro hormone of ADH is pre-pro presophycin, है ना. It is a 19 amino acid pre-pro hormone. In fact, ADH is a oligopeptide of 9 amino acid only. Okay, ADH as well as oxytocin, both are having 9 amino acids, and but its precursor molecule is having a 19 amino acid and it is called pre-pro presophycin. Okay, and after that what happens that along with the AVP, that is the vasopressin, arginine vasopressin, ये जो pre-pro hormone है, इसके साथ साथ में there are other molecules as well, other proteins. The most important is the neurophysin 2. ये साथ में आता है लग करके, जब नीचे आ रहा होता है, तो along with the neurophysin 2, okay, it comes along with this molecule, and there is glycoprotein molecule also. So pre-pro hormone में it is not only ADH, along with the ADH there are other molecules as well. There are neurophysin 2, okay, and there are glycoproteins. These neurophycins are actually carrier molecules. ये कैरी करके लेके आने के लिए है ना, ADH को कैरी करके नीचे ले जाना है, तो ये कैरियर की तरह काम करता है neurophycins. And this along with the, तो 3 molecule हो गए pre-pro hormones. This is ADH, vasopressin, then neurophysin 2. Neurophysin दो तरह के होते हैं, 1 and 2. 1 is mainly going to synthesize carrying the oxytocin hormone. It is associated with oxytocin, and 2 is mainly associated with ADH. Okay, and you can see here after this it is pre-presophycin हो जाता है. इसके बाद क्या होता है, there are different proteolytic enzymes which cleaves it. All these 3 molecules are separated, and you can see there are ADH molecule, vasopressin, arginine vasopressin full name, and neurophysin 2 अलग हो गया, then glycoprotein. तो इस तरह से हमारा pre-pro hormone, then pro hormone, then hormone is getting synthesized. Neurophysin, it is acting as a carrier protein, ये साथ में ले जाने के लिए, okay, ADH to transport the hormone from cell body to the terminal portion of the egg. Okay, and neurophysin 1, as I have told you, it is mainly associated with oxytocin. Neurophysin दो तरह के हो गए. Okay, but how this ADH secretion is regulated, हमारे body में maintain कैसे रहते हैं ADH का secretion? So it is mainly, there are 2 stimulus. You know, if you take little water for a prolonged period of time, तो क्या होगा, आपका ADH लेवल बढ़ेगा या घट जाएगी? अगर आप ज़्यादा देर के लिए आप thirsty है, you are not able to drink water, what will happen?
तो ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? अगर आपने पानी नहीं पिया काफी देर से तो आपका ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, जोर से बोलो ना, इट विल इंक्रीज या डिक्रीज? यस, क्या होगा बेटा? इट विल डिक्रीज। हाउ? कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने को क्या कहते हैं? डिक्रीज कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं ना। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हमारा अप टू 300 होता है, 290 300, इट विल इंक्रीज। जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हमारा एडीएच लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एडीएच लेवल विल इंक्रीज और डिक्रीज? एडीएच लेवल विल इंक्रीज ना, so that it will absorb more water. वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, क्योंकि जो ज्यादा हो गया था, है ना, पानी आपने कम पिया, so what has happened? Your blood osmolarity has increased, it has become more concentrated. So what will happen? There will be more release of ADH from the posterior pituitary. There should be more release of ADH from the posterior pituitary so that it should absorb more water, isn't it? वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी आपका न्यूट्रलाइज करेगा, तो बढ़ गया, isn't it? So this is the plasma osmolality is one of the stimulating factors, and also there are blood volume, blood pressure, है ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर आपका ECA वॉल्यूम बढ़ जाती है अगर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? इफ योर ECA वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस, so your blood pressure will increase or decrease? अगर आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया बॉडी में तो ब्लड प्रेशर क्या होगी? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, है ना। ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाती है आपका बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, है ना, ECA वॉल्यूम बढ़ती है तो। सो दीज आर द टू एक्चुअली स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ ADH. You can see in this diagram that if the plasma osmolality is increasing, increase हो रही है तो क्या हो रहा है? ADH सिक्रीशन भी बढ़ रही है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है हमारा तो क्या हो रहा है? ADH बढ़ रही है, सो दैट वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ऑस्मोलैरिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, isn't it? And you can see here, if there is decrease in pressure, प्रेशर अगर घट रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रही है, तो क्या होगा? आपका प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए ना। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रही है, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर अगर घट रही है, बीपी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रही है, आपके बॉडी में वॉल्यूम स्पेस कम हो रही है। कम हो रही है तो उसको ज्यादा करने के लिए क्या होगा? यू हैव टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, सो ADH शुड बी मोर। कैन सी प्लाज्मा ADH इज इंक्रीजिंग। ब्लड प्रेशर अगर कम हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, ECA वॉल्यूम एक्सपैंड करने के लिए ADH इंक्रीज ज्यादा होगा, ठीक है। दिस डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रेगुलेशन इज हैपनिंग। ADH सिक्रीशन कैसे आपका रेगुलेट हो रहा है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू कैन सी यू आर टेकिंग लेस वाटर, सपोज यू आर थर्स्टिंग फॉर अ क्वाइट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट विल हैपन? ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, देयर आर रिसेप्टर्स, है ना। ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन में क्या आता है? देयर आर रिसेप्टर्स फॉर दैट। दोज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करती है, इंक्रीज हो रहा है, ये डिटेक्ट डिक्रीज हो रहा है ना, वो उसको डिटेक्ट करते हैं। दोज आर कॉल्ड ऑस्मो रिसेप्टर्स, and these osmoreceptors are actually located in these areas. These are called SFO. क्या है? These are called subfornicial organ. Do you know that there are areas in your brain, है ना। नॉर्मली क्या होता है? हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, isn't it? Everything cannot go inside the brain, isn't it? There are blood brain barrier, but there are certain areas in the brain which is outside the blood brain barrier. Do you know this thing? There are certain parts in your brain in which this blood brain barrier does not apply in that area. Okay, those are called circumventricular organs. पढ़ा है आपने?
शायद पढ़ा होगा आपने में भी ब्लड सीवीएस में, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। सर्कमवेंट्रिकुलर मींस आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एफिशिएंटली काम नहीं करता, एंड दीज एरियाज आर बेसिकली SFO, सब फॉर्निशियल ऑर्गन, OVLT, organum, vasculosum, lamina terminalis. Then there are area postrema and posterior pituitary. These 5 areas are considered as outside the blood brain barrier. तो वहां पे तो ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है वहां पे चला जाएगा, है ना, एंड थ्रू दैट इट विल डिटेक्ट द ऑस्मोलैरिटी whether it is increasing or decreasing. So once it is detected out, it transfers that stimulus, जो information मिला है, to the hypothalamus. Hypothalamus में there are median preoptic nucleus, preoptic nucleus है, especially median preoptic nucleus. ये क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है, you know, it sends the information to these 2 nuclei, mainly the supraoptic nuclei. ना, पहले तो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में आया, उसके बाद सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन देगा, वेयर द ADH हैज टू बी सिंथेसाइज्ड. सो इट विल टेल दैट द blood has become more concentrated, please make more ADH, isn't it? So here the ADH synthesis will increase. समझ में आ रही है? So ADH secretion अगर ज्यादा हो जाएगा, what will happen? Then through the magnocellular neurons it will come there. कहाँ पे आ जाएगी? posterior pituitary. posterior pituitary में क्या होगा? इसको stimulus देगा and more ADH will be released. है ना? तो वाटर आपने कम लिया तो क्या हो गया? सॉरी, वाटर कम लिया तो डिटेक्ट आउट कर लिया इसको ऑस्मो रिसेप्टर्स ने. अल्टीमेटली द ADH सिंथेसिस हैज इंक्रीज्ड. जब ADH सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली इट हैज टू रीअब्सॉर्ब वाटर. ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना, यूरिन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड एंड यू विल रीअब्सॉर्ब मोर वाटर. सो बट हाउ दिस हैपेंस एक्चुअली? ये वापस से सर्कुलेशन में जाते हैं, ये सर्कुलेशन के थ्रू आपके किडनी तक पहुंच जाते हैं, है ना, नेफ्रॉन्स एरिया में. एंड इन नेफ्रॉन्स, इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स, these are having the receptors for it. ADH के लिए receptors है ना. ये कैसे reabsorb कर रहा है? वाटर को reabsorb करने है ना. can see water is getting reabsorbed. this is the luminal side. water is reabsorb हो रहा है वापस, सर्कुलेशन में जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करना है ना, नॉर्मलाइज करना है. सो व्हाट इट डज दैट, दे आर रिसेप्टर्स. इसके जो लाइनिंग सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो लाइनिंग सेल्स है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है ADH के लिए. दिस रिसेप्टर्स आर मेनली V2 टाइप ऑफ रिसेप्टर. V1 और V2 दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं ADH के लिए. सो V2 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं. V2 रिसेप्टर जैसे इस पे ADH आके, देयर आर व्हाट हैपन दैट G प्रोटीन को स्टिमुलेट करते हैं, G स्टिमुलेटरी प्रोटीन. थ्रू दैट व्हाट हैपन दैट इट फॉर्म्स द ADP, एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है. एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम, व्हाट इट डज, एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है. एंड थ्रू दैट साइक्लिक AMP में ज्यादा बनेगा, देयर आर मोर प्रोटीन काइनेज एंड मोर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एंड व्हाट विल हैपन, देयर आर एक्वापोरिन्स ओवर हियर. सेल्स के अंदर में एक्वापोरिन्स होते हैं जो वाटर चैनल्स कहते हैं, है ना. स्पेशली जो एक्वापोरिन 2 होते हैं, वो क्या होता है, चैनल जो है वो वेजिकल्स के अंदर में होते हैं, अंदर में. तो जैसे ये ADH आता है, वो चैनल्स क्या होता है, वेजिकल्स के सरफेस पे आ जाता है चैनल्स, और वो चला जाता है वो लाइनिंग एपिथेलियम में. सो व्हाट इट हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH थ्रू दिस सेकंड मैसेंजर पाथवे, दीज एक्वापोरिन्स, ये एक्वापोरिन चैनल्स हैं, ये चैनल्स इधर शिफ्ट होते हैं, इस पे आ जाते हैं, और ये इस पे आकर स्टडेड हो जाते हैं. So what will happen? Whatever the water which is coming here, it will be reabsorbed, है ना. तो reabsorb होगा, ultimately it will go to the circulation and your osmolarity will be normalized. Are you able to understand or not? Yes or no? Tell me please. बोलो, आया समझ में?
अगर ऑपोजिट टू दैट, अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, सो लेस एडीएच विल बी रिलीज। एडीएच कम होगी तो क्या होगा, यू विल पास मोर यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन, isn't it? So this is the mechanism actually how it is occurring. And these aquaporins are mainly aquaporin 2 type of channel. There are different types of aquaporin, you know, there are 12 to 13 aquaporins. So aquaporin 2 are, these aquaporins are aquaporin 2 type of channel. Okay, usually 1 2 3 are mainly associated with renal area. So this thing, so ADH is acting on the kidney through which type of receptor, V2 type of receptor, है ना। एंड लेकिन एक और काम होता है साथ में, एक और क्या काम होता है साथ में, इट एक्ट्स ऑन द ब्लड वेजल्स आल्सो। ब्लड वेजल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सो व्हाट विल हैपन, टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर थ्रू द V1 receptors, that's why it is called vasopressin. Okay, so there are 2 types of receptor, I have told you, V1 and V2. V2 receptors are located on the kidney tubules. And ADH, under the influence of ADH, what is happening, this the permeability of the tubular cells for water is increased by these V2 receptors, by activating this type of receptors and the second messenger pathway. इसी चीज को बताया यहाँ पे फ्लो चार्ट में। Release of ADH from the posterior pituitary, binding of ADH with the receptor, V2 type of receptor, activation of adenyl cyclase CAMP pathway system, increased cyclic AMP, protein kinase is getting activated, so ultimately it causes phosphorylation, and phosphorylation जब भी होगा वहाँ energy produce होती है. Under that influence, what is happening? There are transport of those endosomes, means water channels, by these microfilaments or microtubules to the luminal surface, so increase water reabsorption via the aquaporins. And V1 receptors, we have discussed that it is present in the blood vessels में जो smooth muscles होते हैं, है ना, वहाँ पे इसके receptors होते हैं V1 के. So ADH is also influencing that pressure action is due to that thing. There are 2 types of actually V1 और V2, दो तरह का बताया आप, but V1 is also of V1A and V1-2, V1B. Mainly ADH is acts through जो vasoconstriction effect जो है वो V1A के थ्रू होते हैं ना, and ADH increases the intercellular, this is the mechanism, vasoconstriction करता है कैसे है, actually कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स को बढ़ा देते हैं, तो कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो vasoconstriction होगा, है ना, activating the membrane phospholipase C in this. Coming on to the functions of ADH. ADH का function क्या हो रहा है? Obviously it is increasing the water reabsorption. Water reabsorption होगा तो आपका जो volume है, ECA volume, it is getting normalized, maintained, and also in high concentration it causes vasoconstriction. V1 action high concentration पे होती है. And there are other functions as well apart from these two. It has been seen that it also facilitates the sperm ejaculation because there is contraction of those smooth muscles of the spermatic cord. Okay, smooth muscles से भी act करते हैं, and also it has been seen that to some extent it increases the corticotrophin releasing hormone also, है ना, so that ACTH secretion भी इसलिए बढ़ाता है. And also it has been seen that glycogenolysis in liver, glucose का level increase होता है इसके influence. Okay, and it also has been seen that it is also associated with some of your memory, brain में जो memory होता है इस पर भी देखा गया है, there is some factor, some effect of that thing also. Regarding some applied aspect of ADH, you know, if there is decrease in or absence of ADH, what will happen? You start releasing more voluminous urine
है ना, ज्यादा वॉल्यूम यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस, है ना. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिक्रीज एडीएच और एब्सेंट एडीएच व्हाट विल हैपन, विल स्टार्ट रिलीजिंग, एब्जॉर्ब नहीं होगा वाटर, so it will start releasing more of the urinary output will increase. But these diabetes insipidus are of two types. If there is the defect is there in the kidney में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर काम नहीं कर रहे अगर, है ना, तो क्या वो रिसेप्टर काम नहीं करे तो वो एक्शन नहीं होगा, वाटर विल नॉट बी एब्जॉर्ब, isn't it? So that is called nephrogenic diabetes insipidus, when the cause is there in the kidney itself. And there are neurogenic diabetes insipidus. Neurogenic means the cause is there in the hypothalamus or pituitary, वहां पे अगर cause हो रही है ना, ADH रिलीज ही नहीं हो रहा, ठीक है. लेकिन नेफ्रोजेनिक वाले में क्या है, ADH तो रिलीज हो रहा है, ADH में भी नॉर्मल और एबव नॉर्मल इनफैक्ट, but still it is not able to function because of the defect in the kidney receptors, है ना. So that is called nephrogenic, and if there is cause in there in the neural area, that is called central diabetes insipidus also, central or neurogenic. There is another actually disorder which is associated with ADH, which is called SIADH. SIADH किसी ने सुना है? Have any one of you heard? No? This is called syndrome of inappropriate ADH secretion. Syndrome of inappropriate ADH secretion. This is also called Schwarz-Bartter syndrome, because उन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बारे में बताया था. Okay, first describe what this syndrome, Schwarz-Bartter syndrome. This is SIADH, famously called SIADH, syndrome of inappropriate ADH secretion. Inappropriate means कम नहीं है, inappropriately high ADH secretion, ऐसे याद रखना है. Inappropriate तो आपको लगेगा कि inappropriate means ADH कम आ रही है, but this is not so. This is syndrome of, नाम तो इसका syndrome of inappropriate ADH secretion, but actually it is syndrome of inappropriately high ADH secretion. ADH is much more than the normal, है ना. What happens, we will discuss diabetes first. Diabetes insipidus, there may be deficiency of ADH, ADH का deficient हो रही है production, है ना, या action कम हो रही है या उसका level कम हो रही है, whatever it is, that will result in diabetes insipidus. And these syndromes, obviously it is characterized by, because ADH is not working, so what will happen, we will have large volume dilated urine, we will pass more voluminous urine, we will pass abnormally large volume of dilated urine, and the subject will be having the problem of polyuria, urine ज़्यादा pass करेगा, पानी भी ज़्यादा पिएगा, thirst भी ज़्यादा feel करेगा. So what will happen, the patient will be having polyuria, means urine ज़्यादा pass कर रहे हैं, polydipsia means more water intake, desire to have more water intake. So these are the main clinical features, but you know this also happens in diabetes mellitus. Diabetes mellitus में भी तो यही होता है, polyuria, polydipsia, polyphagia, यही बोलते हैं ना. लेकिन दोनों में differentiate कैसे करेंगे? How will you differentiate it? Yes? Can anyone think about it? जोर से बोलो ना. You want to tell, please stand up and tell. Yes? Want to tell? Huh? So what will happen? How will you differentiate it? You know this, these subjects are passing large voluminous urine. Water content, water absorb नहीं हो रहा, water content ज़्यादा pass हो रहा है. So urine osmolality will increase or decrease? Urine osmolality इसका diabetes insipidus में increase हो जाएगी या decrease होगी? It will decrease, क्योंकि water ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है? Less concentrated urine will pass. So urine osmolality will decrease, and in diabetes mellitus the urine osmolality increases or decreases? It increases, क्योंकि ग्लूकोज का प्रेजेंस होती है. So एक तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं.
है ना, मेन डिफरेंशिएशन इट इज यूरिन इज हाइपोऑस्मोलर डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें हाइपरऑस्मोलर होगी, एंड लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, नॉर्मल होती है इससे और काफी कम हो जाती है। एंड ऑल्सो इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, क्योंकि ग्लूकोज इसमें क्या है तो वाटर ज्यादा होता है, सो इट विल बी टेस्टलेस, द यूरिन इज, और उसमें ग्लूकोज होती है, सो इट विल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इट विल बी मोर एक्चुअली टेस्टफुल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसिपिडस। ठीक है, वहां पे क्या होगी, हाइपर ऑस्मोलर, मोर ऑस्मोलैरिटी may increase up to more than 1200 milliosmoles, and urine becomes, due to the presence of glucose in urine, the urine is somewhat tastier. Okay, so the next part, that is the two types of diabetes insipidus we have discussed, nephrogenic, neurogenic. Nephrogenic means lesion is there in the kidney, we have discussed, because ADH secretion is normal but kidney is not responsive due to the receptor problem. It may be deficiency or abnormality of that, maybe it is a genetic defect, genes में defect हो गए, receptor काम नहीं कर रहा, okay, which may be due to genetic or it may be due to acquired causes as well. There are certain drugs you must have heard, आपने सुना होगा कुछ drugs होते हैं जो किडनी को खराब करते हैं, है ना, स्पेशली कौन से ड्रग्स होते हैं, लाइक किसी को पता है, कोई इंजेक्टेबल होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमिकासिन का इंजेक्शन देते हैं, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है यूटीआई का प्रॉब्लम, सो इट कॉजेज, इट इज समवट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के जो होते हैं, और ऑल्सो सिस्प्लैटिन ड्रग्स होते हैं, ओके, देयर नंबर ऑफ ड्रग्स एक्चुअली, सो एम्फोट्रेसिन बी होते हैं, so these are all there are certain drugs which causes actually nephrotoxic drugs, so उसके चलते भी हो सकती है ना, ये आपको रिसेप्टर को प्रॉब्लम कर देते हो, जो ड्रग्स देते हैं ना वो रिसेप्टर में ऑल्टरेशन करती है, so what will happen on that nephrogenic diabetes insipidus में आकर, okay, and the treatment यहाँ पे हम क्या करते हैं, there is a drug which is called chlorpropamide. This drug actually it increases the responsiveness of ADH. ADH का response कम हो रहा था ना, उसके response को बढ़ाते हैं drug से, okay. But the next diabetes insipidus is central diabetes insipidus. Neurogenic, the problem is there in the central nervous system. ADH, no or very little production of ADH बन ही नहीं रहा, है ना. नेफ्रोजेनिक वाले में तो नॉर्मल थे या मे बी एवं नॉर्मल, हियर यू नो मे बी देयर इज डिफेक्ट इन द हाइपोथैलेमस, वहां से सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा, या मे बी देयर इज डिफेक्ट इन द posterior pituitary, so there is no or very little production of ADH, though hypothalamic, through the hypothalamic pituitary system, so it may be there in the hypothalamus या ट्रैक्स में प्रॉब्लम हो गया, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो गया, या हाइपोथैलेमस में, कहीं पे भी हो सकती है, ओके. एंड हियर बिकॉज यहाँ पे एडीएच का सिंथेसिस नहीं हो रहा, सो यू रिक्वायर रिसेप्टर वगैरह तो ठीक है, सो इफ यू गिव अ सिंथेटिक एडीएच, है ना, मार्केट में सिंथेटिक एडीएच भी आते हैं इन द नेम ऑफ डेस्मोप्रेसिन, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक एडीएच एनालॉग, सो इफ यू गिव दिस सिंथेटिक एनालॉग, सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट वर्किंग, isn't it? So neurogenic वाले में ये दे सकते हैं. The next defect is the SIADH, Schwarz-Bartter syndrome. That is syndrome of inappropriately high ADH secretion. इस तरह से याद ही रखना है आपको, syndrome of inappropriately high ADH secretion. So what is happening here? यहाँ पे ADH प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, excessive production of ADH in spite of diluted blood. इसमें क्या होता है, हमारा ऑस्मोलैरिटी, हमने क्या पढ़ा था, स्टिमुलस क्या था, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, इन स्पाइट ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड, हाइपोऑस्मोलर ब्लड है, फिर भी क्या हो रहा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एडीएच इज देयर, है ना. अगर हाइपोऑस्मोलर ब्लड होगा, है ना, ब्लड इज diluted blood is there, hypoosmolar blood, so what do you think, so अगर hypoosmolar है तो क्या होगा,
देयर इज एक्सेसिव नहीं होना चाहिए ना, एडीएच सिक्रीशन कम हो जाना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, होना चाहिए। हाइपोऑस्मोलर है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड इज देयर, सो व्हाट इज योर नॉर्मल एक्सपेक्टेशन? नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज if it is less concentrated blood, so you want normalized concentration करना है, so ADH secretion क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना, so that it may pass. So excessive production of ADH in spite of diluted blood. Okay, so diluted blood है, फिर भी क्या हो रहा है? excessive production of ADH. Already blood diluted है, फिर भी ADH secretion ज्यादा हो रही है, तो और ज्यादा diluted हो जाएगी ना। सो बट दिस हैपेंस, दिस SIADH occurs in some of the actually very known syndrome, known disease actually, especially ectopic ACDH production होते हैं। At times what happens, एक तो normally हमारा वहां से बन रही है hypothalamus और posterior pituitary is involved there in ADH production, but in case of certain cancers, especially lung cancer, लंग कैंसर में एक टाइप का कैंसर होता है विच इज वेरी कॉमन, विच इज कॉल्ड स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC. So that is more common cancer in among the lung cancer. So if it is the lung cancer के केस में अगर SCLC है, तो उस केस में क्या होता है, उस तरह के पेशेंट्स में वो वाले क्या होते हैं, जो लंग कैंसर का जो एरिया है वहां से ADH प्रोडक्शन वो ज्यादा कराते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ. So SIADH is seen in, classically seen in some patients with lung cancer, especially the small cell lung carcinoma. This is ectopic ADH, बाहर से आ रहा है ना। एक तो इंट्रिंसिक भी हो सकती है, ADH प्रोडक्शन ज्यादा, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में डिफेक्ट हो गई, वहां पे कोई ट्यूमर हो गया, तो दैट इज इंट्रिंसिक, बट देयर में एक्सट्रिंसिक एज वेल, ectopic ADH. Okay, also in head injury also this may occur, trauma, head injury है ना, इसमें हो जाती है. So what are the features actually? Features क्या मिलेंगे? Can you think what are the features you can think of? There are inappropriately high ADH secretion. So what will happen? Urine volume कैसा होगा? Diluted होगा या concentrated होगी? ADH secretion inappropriately very high, concentrated हो जाएगी ना. So despite क्या हो रहा है आपका inappropriately high ADH secretion, patient will be passing highly concentrated urine. Though blood osmolarity कम है, फिर भी ADH secretion का influence ज्यादा चुकी हो रहा था, ectopic production है, maybe due to intrinsic factor. So ADH secretion is much higher. Though the blood osmolarity is below normal, hypoosmolar blood है, फिर भी क्या हो रहा है, ADH प्रोडक्शन ज्यादा चुकी हो रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग मोर हाइपोऑस्मोलर, हाइपोऑस्मोलैरिटी और कम हो जाएगी, है ना, एंड द सब्जेक्ट विल पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, इजंट इट, एंड दैट इज कॉल्ड. सो ADH के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, वाटर तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है अलॉन्ग विथ, तो वाटर जब कंटेंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो सोडियम होगी इट विल कॉल डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी ना. डाइल्यूशनल मीन्स वाटर कंटेंट के अंदर में क्या हो रहा है, जो अंदर में जो सोडियम है वो क्या हो रही है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, है ना, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज ADH प्रोडक्शन. इंक्रीज ADH प्रोडक्शन हो गया, इनएप्रोप्रिएटली हाई ADH secretion is there in this patient. So what is happening, under that influence what is happening, it causes dilutional, dilution करा देगा ना, जो भी सोडियम वहां पे पहले से है उसको क्या करेगा, डाइल्यूशन कर देगा. So that is called dilutional hyponatremia due to increased absorption of large quantities of water, and ECA volume will increase actually. And what will happen, there are aldosterone also, you know, है ना, adrenal cortex से निकलती है, adrenal gland से. So what is happening, जब हमारा ECA वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है ना, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, वाटर रीअब्सॉर्ब ज्यादा हो रही है, so what is happening, ECA वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. जब वॉल्यूम जब इंक्रीज होती है ना, तो यू नो हमारे राइट एट्रियम में
there is a hormone which is released from there. Do you know? ANP होती है ना, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, है ना? तो क्या करेगा वो, ANP ज्यादा रिलीज करेगा वहां से। ANP क्या करता है ये, इट इज हैविंग इनहिबिटरी रोल ऑन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर देता है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, यू नो है ना, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करता है। So what is happening? Large quantities of water, increased ANP, so aldosterone is getting decreased. जब aldosterone decrease हो जाएगी तो क्या होगा? सोडियम reabsorption भी कम हो जाएगी। सोडियम को reabsorb करना है aldosterone, तो सोडियम reabsorption कम हो जाएगी तो क्या होगा? सोडियम का लॉस होना शुरू हो जाएगा यूरिन के साथ, isn't it? That is called natriuresis. Natri means sodium. That will lead to natriuresis. समझ आ रही है? Though there is dilutional hyponatremia, despite that there is natriuresis. समझ आ रहा है? And ठीक है, but there is a effect. लेकिन क्या होता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ये prolonged हो गई तो पेशेंट एक्सपायर कर जाता है ना। पेशेंट इनिशियली आपको lethargy or weakness, then what will happen, the confusion, the subjects may have seizure episode and ultimately the patient may die. But what happens actually, there is a actually compensatory mechanism occurs in those patients also. Patient ऐसा नहीं कि तुरंत die कर जाते, most patients are do not die so soon actually. So how they compensate? Compensate कैसे करते हैं actually? Through the vasopressin escape mechanism. There is a mechanism which is called vasopressin escape mechanism. Vasopressin का काम क्या है? ADH यहाँ पे क्या कर रहा था? वाटर को reabsorb ज्यादा कर रहा था ना. So after a certain period of time, what happens? This ADH का जो एक्शन है वो escape करने लगता है. That is called vasopressin escape mechanism. What happens actually? जो उसके receptors होते हैं, वो receptors क्या करते हैं? After a certain period of time, it does not work, है ना? उसके receptors ठीक से काम नहीं करते. So receptor काम नहीं करेंगे तो ADH एक लिमिट के बाद काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा. So क्या होगा? ADH अब काम नहीं कर रहा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अब कम हो गया. अगर ये रीअब्जॉर्ब होते रहेगा तो क्या होगा? सोडियम का लॉस हो रहा है ना, और वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है. So patient cannot survive. Despite that, these patients survive for a quite period of time, है ना. पेशेंट काफी टाइम तक नॉर्मल रहते हैं ड्यू टू दिस vasopressin escape mechanism. ठीक है. एंड द ट्रीटमेंट इज हियर. यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे? द ट्रीटमेंट ऑफ द काउ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. जो भी काउज है, वेदर इट इज ड्यू टू सम, अभी बताया आपको, एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन हो रहा है, एक्टोपिक ADH प्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रिंसिक काउज है, एक्सट्रिंसिक काउज है, देयर में हाइड्रोजेनिक काउज एज वेल. सो काउज को पहले आपको डिटेक्ट आउट करना हो, डायग्नोसिस बनाना हो, है ना. उसके बाद देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड. वन ऑफ द वेरी फेमस ड्रग व्हिच इज यूज्ड इज कॉल्ड डेमेक्लोसाइक्लिन. डेमेक्लोसाइक्लिन जिस पेशेंट में कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में काम नहीं कर रहा, उसमें ये यूज कर लेंगे. डेमेक्लोसाइक्लिन क्या करता है? इट डैमेजेस द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन सच अ वे दैट द रिसेप्टर बिकम्स अनरेस्पॉन्सिव. ये रिसेप्टर को जाके खराब करता है ये ड्रग. जब रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? ADH का एक्शन नहीं होगा, है ना. डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जो हो रही है वो नहीं होगी, है ना. सो दिस इज द वेरी फेमस ड्रग व्हिच इज यूज्ड, डेमेक्लोसाइक्लिन. Another few important points about oxytocin, you know, we have discussed that it is synthesized there mainly in the paraventricular nuclei, है ना. After synthesis, it is secreted in the posterior pituitary where it is stored. Posterior pituitary में store रहती है. Precursor molecule इसका भी है, pre-pro-oxyphycin है इसका, है ना. pre-pro-presophycin वहाँ पे थी, pre-pro-oxyphycin is the precursor molecule which contains oxytocin, neurophysin 1 है यहाँ पे, and glycoprotein also, and enzymatic degradation होगा, अलग अलग हो जाएंगे. And how it is regulated? There are two mechanisms, you know. There are oxytocin secretion. There are two stimulus actually. Suckling, you know, it increases more production of oxytocin and prolactin as well.
and the cervical dilatation at the time of parturition. So there are two stimulus for more production of oxytocin. Okay, and there are other stimulus as well. If there is genital stimulation during the sexual act, it also increases the oxytocin release. Okay, and alcohol has been shown to inhibit the oxytocin secretion. So those females who are having alcohol consumption, so they are having their feeding problems होती है. Okay, and parturition में भी problem होती है, delivery के time में भी problem आती है. So functions of oxytocin. So you know the oxytocin, it mediates two important reflex mechanism is there. These are called neurohumeral reflex. These two reflex mechanism are called neurohumeral reflex. Usually the reflexes are neural reflex, लेकिन यहाँ पे क्या neurohumeral reflex is there. Neural mechanism is also there, and there are hormone also associated with those reflex. That's why it is called neurohumeral reflex. Milk ejection reflex and parturition reflex, दोनों बहुत important question है आपके exam के लिए, you know. And you know milk ejection reflex कैसे हो रहा है? Whenever the baby suckles the nipple, what happens? There are tactile receptors over there. So the tactile receptors, the afferent fibers, they will be activated here, afferent nerves, and in the spinal cord, through the spinal cord, it will go to the higher center. है ना, एक तो टच कर रहा है बेबी, तो टच के लिए वो थैलमस की तरफ जाएगा, थैलमस को क्रॉस होके जाता है, यू नो, टच के पाथवेज, एंड देयर गिव्स ए कोलैटरल आल्सो, एक ब्रांच देता है बीच से, है ना. So the collateral goes to the hypothalamus, and the hypothalamus mainly the paraventricular nuclei mainly, क्योंकि वहां से ऑक्सीटोसिन मेन स्टोर होता है, वहां पे सिंथेसाइज मेन होता है paraventricular nucleus. So where the collateral is stimulating these paraventricular nuclei and partly also the supraoptic nuclei, and you know it will stimulate the posterior pituitary to release more of the oxytocin, and this oxytocin will go into the blood, and through the blood it will reach here, the myoepithelial cells, isn't it, which are having this milk. ठीक है ना. So this is the neural mechanism, ये neural है, this is humeral. So that's why it is called neurohumeral mechanism, reflex mechanism. This is milk ejection reflex. Then the last one is the parturition reflex. During the parturition, what happens? It is an example of, you know, positive feedback mechanism. So what is happening? How it is occurring? So when at the time of parturition, actually, just before the delivery or during the before the parturition, what happens? During the pregnancy stage, there are in the uterine muscles, uterus में जो muscles हैं, वहाँ पे receptors होते हैं oxytocin के लिए. Those receptors get up-regulated, up-regulation होता है, receptors बढ़ जाते हैं, जैसे requirement होता है वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है. So what is happening? There is up-regulation of these receptors during the last part of the pregnancy. So oxytocin, more than 100-fold increase in these receptors. So what will happen? This causes the increased prostaglandin formation in the endometrium. जो आपका endometrium है uterus में. So you know these endometrium are actually synthesizing under the influence of oxytocin the prostaglandins. There are different types of prostaglandin, you know. Okay, these prostaglandins here actually helps in the uterine contraction, है ना, uterine contraction में help कर रहा है. It increases the sensitivity of myometrium to oxytocin. ये prostaglandin के influence में क्या हो रहा है? Myometrium is getting more sensitive to oxytocin. So under that, what is happening? There is increased uterine contraction under the influence of these prostaglandins. The uterus contract ज़्यादा करेगा. What will happen? So there will be dilatation of the cervix and of the vagina also. And जैसे dilate होगा, baby रहता है, stretch होती है, stretch होने से क्या होगा? Uterine contraction भी हो रही है. So what is happening here? This stretching of the cervix and the vagina, this is the stimulus from the cervix and vagina. They will be taken up by these afferent fibers,
to the nucleus in the hypothalamus, paraventricular nucleus, and this paraventricular nucleus through the efferent fibers it will release more of the oxytocin, and ये oxytocin ज़्यादा release होगा, so what happens that it further influences the uterine contraction, है ना. ऑक्सीटोसिन को ये क्या कर रहा है, ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म it is causing more contraction of the uterus, so in that way it is acting as a positive feedback mechanism until the delivery of the fetus. इतना dilated हो जाएगा तो fetus parturate कर जाएगा. So there are certain other functions of oxytocin. It facilitates the degeneration of the corpus luteum at the end of the menstrual cycle. You know, it forms the corpus albicans, I think, है ना, and at the time of ejaculation sperms को propel करने में help करते हैं towards the urethra, and also during the pregnancy stage acceptance rate को बढ़ाते हैं. In females, oxytocin causes contraction of the non-pregnant uterus to facilitate sperm intake, sperm को transport को बढ़ाने में help करते हैं into the fallopian tube. So there are certain drugs, you know, oxytocin के injections आते हैं ना, delivery के time में दिया जाता है. These drugs are called oxytocis. Okay, preparations of oxytocin को कहते हैं. इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज करते हैं, अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है ना तो उसके लिए हम देते हैं यहाँ पे इंड्यूस करने के लिए, एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. लेबर हो रहा है उसमें आसानी होने के लिए ये देते हैं, एंड ऑल्सो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा ऑल्सो. बेबी बाहर आ गया, प्लेसेंटा को निकालने के लिए भी इन्फ्यूजन चलाते हैं. till the placenta is delivered out, it is given to prevent excessive postpartum hemorrhage. PPH को decrease करने के लिए भी. Okay, so in that way we have finished the pituitary gland.